Hello everyone and welcome to my channel Biophilia. So today we are going to understand this concept of contraceptive devices. So this concept comes under this chapter for 10th standard, that is 10 CBSE specifically, that is how do organisms reproduce. So under that we have sexual reproduction in human beings. So under that topic we have contraceptive devices. So today we are going to learn this concept of contraceptive devices. So let's talk about what we are going to learn in this topic. Under this topic, we'll be learning about definition. We'll be learning about contraceptive devices, that is the different types of it, and what are the advantages of using it. So let's go ahead. So what is the meaning of contraceptive device? So contraceptive devices, they basically prevent the process of fertilization. So as we all know, fertilization means fusion of sperm and egg. Sperm is the male gamete and egg is the female gamete. So the male gamete and the female gamete, when they fuse with each other, they form a zygote. So this is fertilization. So contraception or contraceptive devices, they prevent this process of fertilization so that there is no pregnancy. Okay. Now let us understand what are the different contraceptive methods or the contraceptive devices which will ultimately prevent fertilization or which will ultimately prevent pregnancy. So let's understand that. So we have here natural methods. Then we have barrier methods. We have oral contraceptive methods. Then we have intrauterine devices and we have surgical methods. So ये है हमारे different types of contraceptive devices. So अब हम हर एक टॉपिक पर हम बात करेंगे जहां पर हमें पता चलेगा कि नेचुरल मेथड्स क्या होता है, बैरियर मेथड्स क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होता है और सर्जिकल मेथड्स क्या होता है. होप दैट्स क्लियर. So let's start with natural methods. So under natural methods, we have this concept called as coitus interruptus. So coitus meaning sexual intercourse. Okay, that is where the male inserts the penis into the vagina of the female. उसका मतलब है coitus. अब look at the name, coitus interruptus. अगर आप देखें interruptus मतलब interrupt करना. So interrupting the process of coitus. Okay, so यहाँ पर there is what kind of interruption is there in the process of coitus? Number one, when the male is inserting the penis into the vagina, he knows when he is going to discharge the semen. So semen, as we all know, it is a mixture of sperm and the fluid that is obtained from the accessory sex glands of the male reproductive system, mainly prostate gland and seminal vesicle. तो उनसे जो लिक्विड निकलता है that when that mixes with the sperm, उसे हम सीमेन कहते हैं. ओके, तो मेल को पता रहता है कि वो सीमेन कब रिलीज करने वाला है into the vagina of the female. So just before he knows, what he can do is he can remove the penis from the vagina. Vagina से वो अपना penis निकाल सकता है ताकि सीमेन directly vagina में discharge ना हो. That is the meaning of coitus interruptus. So it's a very simple method, natural method. इसे natural क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म. इट्स अ वेरी नेचुरल मेथड वेयर ही जस्ट हैज टू रिमूव द पीनस बिफोर डिस्चार्जिंग द सीमेन. So understood that? Hope that is coitus interruptus. Now the second one is barrier method. In this method, like a barrier, like if I say there is a barrier between class A and class B, matlab there's something that is stopping from class A and class B to talk, or class A students and class B students to talk with each other or to meet with each other, right? So यही वैसे ही है, यहाँ पर एक ऐसा कुछ तो बैरियर है, ऐसा कुछ तो वॉल है जो स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देता, which does not allow the sperm and the ovum, that is the egg cell, to meet. Obviously, if they don't meet, fertilization will not occur. So that is the meaning of barrier methods. So under barrier methods, we are going to use some devices. Okay, so that device will act as a barrier or a wall. Okay, so that's why this doesn't come under natural method.
So let us understand what are the different types of barrier methods. So under this, we have condoms, we have diaphragm, cervical caps, and walls. So let's talk about the first thing, that is condoms. Now, condoms जो होते हैं, male condom भी होता है, female condom भी होता है. There are two types, male condoms and female condoms. Okay. So when you talk about a male condom, there is a rubber sheet or a latex sheet. Okay. Either it's made up of rubber or latex. So this rubber or latex sheet is going to cover the penis. So just before coitus, just before sexual intercourse, the male is going to put that rubber sheath or the latex sheath, that is a male condom, on his penis so that the penis is covered. So इससे क्या होगा? During sexual intercourse, when the male inserts the penis into the vagina, and when there is discharge of semen, the semen is not discharged into the vagina. The semen is discharged into that male condom, which is covering the penis. So there's no discharge of semen at all. So obviously, if semen is not going to enter into the vagina, obviously sperms will not enter into the vagina. So there is no meeting of the sperm and the egg. So fertilization is definitely prevented. That is one thing. And second is female condoms. Okay, जो female condoms होते हैं, that is going to cover the vagina. So when that covers the vagina, definitely the semen at the time of sexual intercourse, the male, when he inserts the penis into the vagina, the discharge of semen will not take place in the vagina. It will be in that female condom, which is going to cover the vagina. So obviously, the semen doesn't enter the vagina. So this is how the male or the female condoms prevent the sperm and the egg to meet, so that they act like a barrier. Okay. Now, let's talk about the second part, that is the second type of barrier method, that is diaphragm, cervical cap, or the vault. Okay. Now, understand one thing. When I spoke about condoms, it was for male as well as female, right? But when you talk about diaphragm, cervical caps, vaults, they are only for female. So these are rubber sheets. Okay, these are rubber sheets that are inserted by a gynecologist or by a doctor into the female reproductive tract. जैसे condoms के लिए you don't need a doctor. A female can herself use a condom, or a male can himself use a condom. Whereas when you talk about diaphragm, cervical cap, and vault, you need a doctor, you need a gynecologist. Why? First of all, here it is not covering the vagina. It is covering the cervix. What is cervix? The last part or the lowermost part of the uterus. Uterus is the part of the female reproductive system where the baby develops, right? So right below the uterus, or we can say it is the last part of the uterus, and that is covered, that is cervix, is covered by this diaphragm, cervical cap, or vault. So a female cannot, reach the cervix on her own. So that's why a gynecologist will insert this diaphragm, cervical cap, or vault into the cervix so that the cervix is covered. Okay, so obviously when the male at the time of coitus or at the time of sexual intercourse, जब male अपना penis insert करता है, definitely there will be discharge of semen into the vagina. यहाँ पर discharge semen का होगा vagina में. Please remember this. And the semen or the sperms in it will travel all the way through the vagina, and then they will be stopped. They will not enter the cervix क्योंकि cervix के around एक barrier है. तो वो cervix तक जाने देगा ही नहीं उसे. So यहाँ पर discharge of semen हो रहा है vagina में, but the semen is not able to reach into the uterus, and hence it is not able to go into the oviduct or the fallopian tube. So automatically the fertilization or the meeting of the egg and the sperm is prevented. Hope it's clear. So you can see here, this is the male condom, and on the left hand side, and on the right hand side, we have the female condom. Okay, and below that, you can also see some pictures of diaphragm, cervical cap, and vault cap, which is only used by a female for covering the cervix. Okay, now the next type of contraceptive devices, oral contraceptive. Oral means something that goes into the mouth, oral, mouth, right? So here, ये जो oral contraceptive है, ये एक तरीके का tablet है, या drugs बोल सकते हैं. Okay, so here, this is again used only by a female. Oral contraceptives are used only by a female. तो इसमें एक tablet होता है या drugs होता है जो female through the mouth she takes it inside her body. तो इसमें क्या होता है, ये जो tablets है या ये जो drugs है, इसमें hormones होते हैं.
सो ये जो हार्मोन है, they will not allow ovulation to take place. What is ovulation? Release of egg from the ovary. जब एग ओवरी से रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. बट जैसे ही एक फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट लेती है, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओव्यूलेशन अलाउ ही नहीं करता है. इट इनहिबिट्स और इट स्टॉप्स ओव्यूलेशन, जिसके कारण अगर एग ही रिलीज नहीं होगा, सो स्पर्म किसके साथ आके फ्यूज करेगा, राइट? तो इसीलिए ये भी फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है बाय स्टॉपिंग ovulation or by inhibiting the release of egg. Is that clear, children? So let's go ahead with the next topic. Now, the next one is intrauterine devices. Intrauterine devices. ये नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरीके का डिवाइस है जो फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है. It is a device which is inserted into the uterus of the female. तो ये अगेन एक डॉक्टर ही करता है. ऑब्वियसली अ फीमेल कैन नॉट रीच द यूट्रस, तो ये एक गायनेकोलॉजिस्ट ही इंसर्ट करता है. ये बहुत ही फेमस डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, स्पेशली ऐसे फीमेल्स में जो अपने बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं. जैसे जैसे एक फीमेल के पास ऑलरेडी एक बच्चा है, नाउ शी वांट्स टू हैव और शी वांट्स टू कंसीव और शी वांट्स टू हैव द सेकंड चाइल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ से 3 or 4 years. That is when they choose this intrauterine devices. So it's a very common in a contraceptive device that is chosen by the Indian women so that they can have a gap, they can have a space between the children. So यहाँ पर डॉक्टर एक टी जैसा डिवाइस, दैट इज टी जैसा डिवाइस मतलब द डिवाइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर टी एंड दैट डिवाइस इज मेड अप ऑफ कॉपर. So that's why it's example of intrauterine device is copper T. Okay, so that copper T is inserted by a gynecologist or the nurse when the female goes to the hospital. It is inserted by the gynecologist or the nurse into the uterus. Okay. नाउ ये क्या करता है, ये कैसे फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है? ये जो डिवाइस है ये इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है. दैट इज व्हाट इज इम्प्लांटेशन. अभी हमें पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, राइट? अब ये जो जाइगोट है बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो, और अब ये जो एम्ब्रियो है इट गेट्स अटैच्ड, वो अटैच हो जाता है टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. इनर वॉल ऑफ द यूट्रस को हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम. तो ये जो हमारा एम्ब्रियो है अटैच हो जाता है टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस. क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को अभी ग्रो करना है तो उसको थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन उसे मिलता है फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस. तो इसीलिए वो एम्ब्रियो जो है वो अटैच हो जाता है टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस. सो ये जो प्रोसेस है वेयर द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन. तो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो इम्प्लांटेशन करने देता ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करता है. सो अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं होगा. तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो ग्रो ही नहीं होगा इनटू अ बेबी, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है और द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टू बी प्रिसाइज वो प्रिवेंट करता है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक टी जैसा डिवाइस दिख रहा है आपको, और ये जो है कॉपर से बना हुआ है, इसीलिए उसे कॉपर टी भी कहते हैं. एंड यू कैन सी इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. ओके, नाउ अभी तक हमने जो भी डिवाइसेस के बारे में बात किया, जैसे बैरियर मेथड्स के बारे में बात किया, ओरल मेथड्स के बारे में बात किया, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बात किया, ये सब टेम्पररी मेथड्स है. मतलब हम ये डिवाइसेस जब तक यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगा या फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा. बट आपको अगर ये परमानेंट आपको फर्टिलाइजेशन नहीं चाहिए, या आपको परमानेंटली आपको कंसीव नहीं करना है या प्रेगनेंसी होने नहीं देना है, तब आते हैं हम ये सर्जिकल मेथड पे. इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन. तो ये जो सर्जिकल मेथड है ये ऐसे लोग ऑप्ट करते हैं. इट इज जनरली चोजन और सेलेक्टेड बाय सच पीपल हु ऑलरेडी हैव 2 kids, who already have 3 kids, and now they don't want to have any children. They don't want any children anymore. So that's why they go in for the surgical method. ओके, अब ये जो मेथड है इसका दूसरा नाम है स्टेरिलाइजेशन मेथड. इसे स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है. अब ये मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है. जैसे मेल में
जो सर्जिकल मेथड है या स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसे हम कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी ये नाम कहाँ से आया? यू एज वी नो मेल में दैट इज मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं वास डेफरेंस। क्या कहते हैं? वास डेफरेंस। ओके, तो ये जो वास डेफरेंस है ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? ये वास डेफरेंस को कट किया जाता है। दे कट द वास डेफरेंस एंड दे टाई इट अप। तो जब वास डिफरेंस को कट करके टाई अप किया जाता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाता है। ओके okay? वैसे ही फीमेल्स में जो सर्जिकल मेथड है या जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो ये जो मेथड है इसमें ये अगेन ये जो टर्म है ये कहां से आया? ट्यूब। दैट इज फीमेल में, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, इसीलिए ट्यूबेक्टोमी ये टर्म आया। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, हमें पता है फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, और जो स्पर्म्स जो है दे कम फ्रॉम द यूट्रस एंड दे एंटर द फेलोपियन ट्यूब। तो अब क्या किया जाता है? ये फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है, तो स्पर्म कैन ऑल्सो नॉट एंटर एंड दिस एग विल ऑल्सो नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। करेक्ट? अगर समझो एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो जाइगोट है, जाइगोट इज गोइंग इनटू द यूट्रस, बट अभी वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्पर्म भी नहीं आ पाएगा और एग भी नहीं आ पाएगा, तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो तो जाइगोट ही नहीं बनेगा, तो एम्ब्रियो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो दैट इज व्हाई हियर द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव, दैट इज इट इज कट और एंड इट इज टाइड। So these are the two types of surgical methods in male, that is vasectomy, and in female, that is tubectomy. और ये जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो अल्टीमेटली कैसे प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है? दे ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। दे ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। होप इट्स क्लियर चिल्ड्रन। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में जो है, यू कैन सी दिस इज द वैसेक्टोमी प्रोसीजर, जहां पर वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, और राइट हैंड साइड में ट्यूबेक्टोमी का प्रोसीजर है जहां पर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है। अब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या है या कॉन्ट्रासेप्शन क्या है वो पढ़ लिया। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो भी पढ़ लिया। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के एडवांटेज क्या है? सो एज हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। दैट इज नंबर वन, जिनको प्रेग्नेंट नहीं होना है, जिनको बच्चा पैदा नहीं करना है, सो इसीलिए ये प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से वो अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है। एंड जो सेकंड पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिवाइसेस, सॉरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें बेसिकली हमने याद है हमने कॉन्डम्स के बारे में बात किया था, अंडर बैरियर मेथड्स। सो जो मेल कॉन्डम होता है एंड जो what we say female condom, basically जो condoms होते हैं that which comes under barrier methods, they are the ones which are preventing the sexually transmitted diseases, that is the diseases which get transferred through sexual intercourse or through sexual reproduction. So all diseases prevent होते हैं only by the use of the condoms. So condoms are not only preventing unwanted pregnancy, they are also preventing the user, or they are preventing the person from transmitting or from getting sexually transmitted diseases, that is STD. So condom के दो advantages होता है. So if they ask you what are the uses of condoms or what are the two advantages of condoms, you can say they prevent STDs and they prevent unwanted pregnancy. But I'm telling you सिर्फ कॉन्डम्स में होता है, बाकी जो भी हमने डिवाइसेस पढ़ा, ओरल डिवाइसेस या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओके, या नेचुरल मेथड, ओके, इन सब में बेसिकली you cannot prevent STD. Yes, you can prevent unwanted pregnancy, but STD prevent नहीं कर सकते हैं only by using condoms. Okay? Now children, let us understand ये टॉपिक पर हमारे प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे यू कैन सी फॉर 1 मार्क 2020 में they have asked which contraceptive method changes the hormonal balance of the body. सो जैसे हमने पढ़ा था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं दे डू नॉट अलाउ द
प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन टू टेक प्लेस, वो अलाउ नहीं करते हैं फॉर द एग टू बी रिलीज। तो वो कैसे करते हैं? बिकॉज दे आर चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बताया था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन, the hormonal balance of the female body changes, and that is the reason why she is not able to ovulate, she is not able to release the egg. Okay. Now, the next question was asked in 2015 for 3 marks. List any 4 methods of contraception used by humans and state in brief the 2 advantages of adopting such preventive methods. तो जैसे अभी हमने just discuss किया, so any 4 methods आप बात कर सकते हो, उसमें condoms के बारे में बात कर सकते हो, उसमें intrauterine devices के बारे में बात कर सकते हो, या surgical methods, sterilization methods के बारे में बात कर सकते हो, oral contraceptive. आपको सिर्फ list करना है. You don't have to sit and explain all the 4 methods, just name them. And advantages of adopting such preventive methods, जैसे हमने बात किया, 2 advantages: they prevent unwanted pregnancy and they prevent the spread of STDs. Okay. नेक्स्ट इज अगेन 2017 में वापस 3 marks में क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो वापस इट्स द सेम क्वेश्चन जैसे हमने 2015 में देखा। तो आपको सिर्फ लिस्ट करना है एनी 3 methods एंड विच वन ऑफ दीज टेक्निक्स इज नॉट मेंट फॉर मेल्स. सो यू कैन टॉक अबाउट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बिकॉज इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, राइट? और you can say any oral contraceptive method. Okay. How does the use of this technique have a direct impact on the health and prosperity of the family? So direct impact, they are able to, have family, plan their family very well. So they are able to have less children. So they are able to provide a good, so they'll have a good economic condition. They are able to provide the best for their children with the help of, these techniques. Got it? So this is about 2017 for 3 marks. Now, the next, again, you can see in the year 2013 for 5 marks, list 4 ways of preventing pregnancy. Again, the 4 सिर्फ नाम बताना है आपको. And again, 2 advantages of using such preventive methods, जैसे हमने previous question में discuss किया. Next, 2019 में 5 marks के लिए question पूछा गया, what is contraception? List 3 advantages of adopting contraceptive measures. Okay. So इसमें 3 advantages तो आप बोल सकते हो, preventing unwanted pregnancy, preventing sexually transmitted diseases, and third is they can, plan their family very well, and they can give the best to each and every child when they, plan their family very well. Okay, so any 3 advantages you can mention. So hope children, you like this video, you like the content of this video. So if you liked it, please share it with your other friends, which will definitely help them to revise their concepts and, to know the questions, previous year questions that were asked for that topic. And so please share it with your friends. Subscribe to my channel, Biophilia, for more such educational topics. Thank you so much, children.